So in the last lecture, we have discussed about interrupt, right? And we have seen that if some high priority job occurs, then a signal has been sent to means first respond to that particular high priority task. Okay, resume the current task and perform the higher priority task, and then comes back again to our resume tasks. Okay. So this thing you got it, the definition that normal execution of programs may be preempted if some device requires urgent servicing. And you know that interrupt is nothing but a signal. Okay. And what is interrupt service routine? Can anybody tell me? Interrupt service routine क्या था? This information, okay, that which interrupt to serve and the signal information, everything is being actually conducted with the help of interrupt service routine. Now, when a device raises and interrupts, say at process I, then the processor first completes the execution of the instruction I. Then it loads the program counter with the address of the first instruction of the ISR. I just told you that what is ISR. You know that this contains the signal information, and the signal information is about the interrupts, right? So the this it loads the program counter with the address of the first instruction of the ISR. Before loading the program counter with the address of the interrupted instruction now is moved to a temporary location, right? Therefore, after handling the interrupt, the processor can continue with the process I+1. Now, while the processor is handling the interrupts, it must inform the device that its request has been recognized so that it stops sending the interrupt request again and again. So saving the register so that the interrupt process can be restored in the futures and increases the delay between the time an interrupt is received and the start of the execution of ISR. And what is that time called as or known as? ये टाइम कितना क्या था जो एक इंटरप्ट सिग्नल आया और इंटरप्ट को सर्व किया गया मतलब स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटरप्ट दैट इज नोन एज इंटरप्ट लेटेंसी पिछले क्लास के सारे चीज भूल तो नहीं गए ना आप लोग No, sir. सही लग रहा है कुछ anyway. Okay, now priority interrupt. What was priority interrupt? Those interrupts which have been given higher priority, right? Like a priority interrupt is a system which decides the priority at which various devices that generates the interrupt signal at the same time will be served by the CPU. Suppose एक I1 है, एक I2 है, एक से I3 है. Which one will be given higher priority? This should be this actually identified, and then that particular high interrupt tasks will be conducted first. Okay, the system has the authority to decide which conditions are allowed to interrupt the CPU while some other interrupt is being serviced. Generally, devices with high speed transfers like magnetic disks, magnetic disks are given high priority, and then slow devices like keyboards are given low priority. ये भी मैंने आप लोगों को बोला था जो हाई स्पीड ट्रांसफर जैसे मैग्नेटिक डिस्क हो गया तो ये सब से जो इंटरप्ट जनरेट होते हैं उसको हम क्या प्रायोरिटी देते हैं high priority. Okay, we give high priority that to those devices which has high speed transfer. Okay, similarly keyboard हो गया और ये इन सबको हम क्या देते हैं low priority. Okay,
When two or more devices interrupt the computer simultaneously, the computer services the device with the higher priority first. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया था आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. माय वॉइस इज कमिंग क्लियरली ना? इधर उधर का आवाज तो नहीं आ रहा है ना आप लोगों के पास? कुछ नॉइस, कुछ और आजू No, बाजू sir. का? क्योंकि मैं No, sir. केबिन में हूँ ना, तो आसपास बाकी फैकल्टी लोग भी क्लासेस ले रहे हैं, तो इसलिए कोई आवाज नहीं आ रहा है ना अभी? ठीक है, No, sir. Yes, sir. good. So now let's come to the topic types of interrupt. मैंने पहले ही फर्स्ट डे में ही आप लोगों को बोल दिया था इंटरप्ट व्हेन आई स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इंटरप्ट may be of different types. Either it may be generated from hardware devices or it may be generated from software programs. Okay, particular piece of code. ठीक है, एक लाइन ऑफ कोड से भी इंटरप्ट जनरेट कर सकते हो आप लोग। कैसे, मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द हार्डवेयर इंटरप्ट। लुक एट द डेफिनेशन वेरी केयरफुली, क्योंकि ये डेफिनेशन से भी कभी कभी मतलब ये इजी नेट और गेट में क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट, when the signal for the processor is from an external device or hardware, then that interrupt is known as hardware interrupt. Okay, very good. Then let us consider an example. Suppose we press any key on our keyboard to do some action. Then this pressing of the key will generate an interrupt signal for the processor to perform that certain task. Such an interrupt again of two types. जैसे आप लोगों ने कोई most probably you have heard about the sticky key, right? Yes, sir. Yes, sir. Can you tell me what is that? क्या है ये sticky key? बता सकते कोई? It is like the shortcut key, but instead of pressing two keys, we have to just press the one. Okay, good. Suppose I have pressed Alt F4. Okay. Then what would happen? First, some the direct shutdown that particular means operations will be conducted. So ये जो मैंने Alt plus F4 प्रेस किया, उसके बाद U प्रेस किया. For some devices that may be a different key means later, but in general I am talking about the default one. So see, आपने तो सिर्फ कीबोर्ड में प्रेस किया है Alt F4, U दबाया, तो ये शट डाउन हो गया. तो ये क्या है? जब when you press the Alt F4, okay, so automatically a signal has been sent to the processor, right? तो ये क्या है? दिस इज इन हार्डवेयर इंटरप्ट. बाकी सारे चीज को छोड़ के अभी जो Alt F4 उसके बाद जो आपने एंटर दबाया, तो ये क्या होगा? आपका सिस्टम शट डाउन हो गया. तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट. ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ वी हैव two different types of hardware interrupt. ये very very important. I suggest that all of you please note it, क्योंकि मैं पर्सनली ये क्वेश्चंस गेट एग्जाम में फेस किया था. ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ मास्केबल एंड नॉन मास्केबल बताऊंगा अभी. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द मास्केबल इंटरप्ट. व्हाट इज दैट टर्म? मास्केबल. The hardware interrupts which can be delayed when a much high priority interrupt has occurred at the same time. वो सारे हार्डवेयर इंटरप्ट जिसको हम थोड़ी देर के लिए डिले और करके रख सकते हैं. क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा सा हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट अभी उस सेम टाइम पे क्या हुआ है? इन्वोक हुआ है, राइट? देन ये इंटरप्ट्स को हम बोलते हैं मास्केबल इंटरप्ट. द हार्डवेयर इंटरप्ट्स that can be delayed when some higher priority interrupts occurred at the same time, then those hardware interrupts are known as maskable interrupt. आ गया समझ में? तो अभी इस एग्जांपल्स क्या है देखो, ये नोट डाउन करो काइंडली. INTR, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 are the maskable interrupts with respect to 8085 microprocessor.
You have to remember these things, that RST 7.5, RST 6.5, and RST 5.5, and INTR. Now, what you will do after the class, you will write one line with respect to each of these instructions or each of this maskable interrupt. क्या करना है आप लोगों को? RST 7.5 क्या है? वेरी सिंपल, एक ही लाइन का चीज है, ठीक है? एक एक लाइन याद रख लो और उसको लिख के मुझे बताओगे when you will get this recorded lecture. ठीक है, समझ में आ गया? बट ये आ Yes, जाना sir. चाहिए कि मैंने कल को पूछ लिया आप लोगों को कि RST 6.5 इज ए फिल इन द ब्लैंक मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट, तो क्या होगा आंसर? इज ए मास्केबल इंटरप्ट। Maskable. और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि RST 6.5 फिल इन द इज फिल इन द ब्लैंक हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, तो ये क्या होगा आपका? Hardware interrupt. Hardware interrupt. Hardware interrupt. Very good. Okay, don't forget this question. Okay, now coming to the non-maskable interrupt. Non-maskable interrupt. The hardware interrupts which cannot be delayed and should be processed by the processor immediately. जो maskable interrupt था ना, उसका जो opposite है, मतलब maskable में ऐसा था कि हाँ ठीक है, जो और higher priority वाला interrupt आ रहा है, पहले उसको हम निपटा लेंगे, उसके बाद जो है ये जो maskable interrupt है उसको execute करेंगे, ठीक है? थोड़ी देर के लिए हम डिले कर सकते थे, बट जो नॉन मास्केबल है ऐसा नहीं है, बाकी कोई भी तरफ आए we are not going to mind. We means I'm talking about the processor, okay? So the processor is not going to mind it. Processor will fast perform this means handle this non-maskable interrupt. Then only the after those interrupts been in there our ISR. Okay. So now non-maskable interrupt मतलब ये हो गया कि जो very high priority interrupt. तो इसके रिलेटेड दो क्वेश्चन हो सकते हैं. नॉन मास्केबल इंटरप्ट इज ए लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट और हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट, तो क्या होगा आंसर? Higher priority interrupt. हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट. और नॉन मास्केबल इंटरप्ट इज ए अगेन ए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर इंटरप्ट? हार्डवेयर इंटरप्ट. Hardware interrupt. Now let's come to the examples of this non-maskable interrupt. Okay, like internet system chipset error, मेमोरी करप्शन, क्योंकि ये चिप चेस्ट हो गया, अगर चिप ही खराब हो गए तो बाकी इंस्ट्रक्शन की तो बात है ही नहीं, यू नो दैट. सपोज आपका मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो दैट शुड बी इमीडिएटली हैंडल बिकॉज without that the other tasks you cannot perform it, the processor cannot perform it. Then parity errors, the parity errors बहुत important है. In some of your next unit we are going to discuss it with some numerical problems. Okay, parity errors. Then high level errors needing immediate attention, जो आपको ध्यान रखना है. chipset error, memory corruption problems, parity errors. Okay, this type of errors coming under non-maskable interrupt. थोड़ा सा देखने से समझ में आ जाएगा. chipset, obviously memory, okay, parity, okay. So in a sense that non-maskable interrupt is a way to prioritize certain signals within that operating system. Okay. Now next question is for you. All of you have to answer. That is, और इसमें मैं अभी से आप लोगों को एक स्टार लगा देता हूँ, ठीक है? कि आप इसरो का अगर साइंटिस्ट एग्जाम आप देने जा रहे हो या तो एनआईसी का देने जा रहे हो, this type of questions being asked there. Okay, and question is trap, TRAP in capitals. Trap is a fill in the blank, maskable or non-maskable interrupt. Is my question clear to you? Trap is a fill in the blank, maskable or non-maskable interrupt. I should get the answer from all of you, right? Can I proceed ahead? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now coming to the next one, that is software interrupt. अभी तक हमने जो discuss किया था, those are from hardware interrupts. Now we do have some software interrupts. The interrupt that is caused by an internal system of the computer system is known as software interrupt. आप how you define software? कोई मुझे बता सकते हो? How you define software?
मुझे प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, नहीं तो बच्चे बच्चों को भी पता है कि सॉफ्टवेयर क्या है ना। तो एज एन आईटी गाय, मींस geek, IT geek, how you will define software? Abir, Sir, Krishna, an Krishna bola. Wow. sir, sir, an application which contains some set of instructions packed in a GUI to accomplish a task. ठीक है, बट मैं फिर भी आपने कोशिश किया, वेरी गुड। ओके, फिर भी मैं आई एम नॉट 100% satisfied with your answer because I assume you as an IT geek. Okay, first of all, software is what? Some lines of code in a program organized in such a way so that the problem for which this means piece of codes or been designed will be solved with less, what I can say, errors and high, what will be the next word? Accuracy. Okay, तो यहाँ पे अभी आप GUI ये सब पोर्ट यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन पियर्सन के बुक में है इस सॉफ्टवेयर का, वो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन मैं नेक्स्ट क्लास में सबको पूछूंगा। तो ऐसे तो आप सभी को पता है सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, लाइन्स ऑफ कोड, जो एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को हम किस लिए बनाए, कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट दे हैव बीन documented, means they have been embarked in such a way that they can solve this problem first taking less amount of time than second with high accuracy. Okay, Accuracy. now, yeah, now what happens, this software interrupt obviously been generated by such types of codes, and it has two types. First one is normal interrupt. The interrupts that are caused by software instructions are known as normal software interrupts. Software instruction से कुछ अगर interrupt आया है, then that is known as normal interrupt. Now, ये तो ठीक है, normal interrupt तो कोई भी, जैसे आप Windows यूज कर रहे, you are using suppose Windows 10 nowadays, we have an upgraded version of Windows that is in testing phase. Can anybody tell me which one is that? Sir, Windows 11. Windows 11 sir. Windows 11 और आगे कुछ नाम नहीं है क्या उसका? देख लेना आप लोग, ठीक है, उसका कुछ और भी एक लंबा सा नाम होगा, ठीक है। तो उसमें भी कुछ एरर आ सकता है, तो दैट विल फॉलो अंडर व्हिच वन? नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, ठीक है। जैसे सपोज ऑफिस यूज कर रहे हो आप, ऑफिस में कुछ एरर आ गया, तो दे आर फॉलोइंग अंडर नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। देन नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? एक्सेप्शन। Unplanned interrupts which are produced during the execution of some programs are called exception. Unplanned because we have not planned it actually. Sometimes interrupt तो हम खुद ही generate कराते हैं, ठीक है, but ये जो है exception, this is unplanned. जैसे आपने suppose print, कोई एक लैंग्वेज का मैं कोड लिख रहा हूँ, 1/0, क्या आएगा इसका वैल्यू? कैन एनीबॉडी टेल मी? Print 1/0. What will be that? You know the value of 1/0? 1/0 by 5/0 by anything divided by 0. Here have value do. What value we get as a result when we divide any number by 0? Infinity. Sir, Infinity. infinity. अच्छा, infinity बोली कोई सा, ठीक है सर। Can we define infinity? আমি infinity define কৰিব পাৰো নে? No sir. No. Infinity is again a question. Okay. Question mark on it means defining means how you structurized it infinity. This is again a
means infinite question. Okay, we cannot define it. Most probably you already gone through a movie where they try to define infinity. सब आए कौन आप लोग देख लेना एक मूवी भी है infinity के ऊपर तो ये जो one by ये जो infinity है we human beings could not define it. So instructions हम कंप्यूटर को कैसे देंगे उस चीज के लिए जिसको हम खुद अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए. तो इसीलिए एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो को हम मान के चलते हैं क्या एक्सेप्शन डिवीजन बाय जीरो. ठीक है. तो आपको कोई भी लैंग्वेज में या तो C++ यूज कर रहे हो पाइथन यूज कर रहे हो एनी लैंग्वेज यू मे यूज बट व्हेन यू एनकाउंटर दिस देन यू शुड डिजाइन. आप जावा कर रहे हो तो खुद ही डिजाइन कर लोगे. When divided by zero, then that will be an exception. What? Division by zero. Okay, got it? Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে. Next তোমালোকেও দুটামান exception চাবলৈ যাবা. যেনেকে মই এটা কৈ দিছো stack overflow. What I have said, stack overflow. Have you gone through the paper data structure? Data structure Yes, paper. sir. তাত most probably sir. তোমালোকে এটা শুনিছা stack STAC. Yes, Stack. sir. Okay, stacks follows the strategy LIFO, last in first out. ঠিক আছে. So stackত যেতিয়া আমি element থৈ গৈ থাকিম when we push, you know, with respect to stack we have operation push, right? So Yes, sir. push Yes, and sir. push mean when we insert that thing, and pop mean when we are taking some elements out of the stack. Now when we are pushing the elements again and again, suppose the stack has the size 5 और stacks 2 मैंने stack का size जो है ना 5 डिफाइन करके रखा है और मैं कोशिश कर रहा हूं उसमें 6 एलिमेंट्स रखने के लिए, तो क्या होगा ये Sir, stack ओवरफ्लो हो overflow जाएगा. हो जाएगा. ओवरफ्लो हो जाएगा. ठीक है, ओवरफ्लो हो जाएगा क्योंकि उसमें जगह है 5 का. वी हैव द स्पेस फॉर 5 डेटा एलिमेंट्स एंड वी ट्राई टू पुश वन मोर एलिमेंट. सो दैट इज अगेन एन एक्सेप्शन. ध्यान रखना इस चीज. ये किस टाइप का इंटरप्ट में आएगा? स्टैक ओवरफ्लो इज अगेन एन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड व्हिच इज पर्टिकुलर ऑफ द टाइप एक्सेप्शन. ठीक है, एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सपोज मेरे जो स्टैक था उसमें एक ही एलिमेंट था. Suppose my stack is S and that only one element is at S0 location. Okay. Now we have already, we suppose we try to perform two pop operations. Listen carefully. Okay. We have one element in our stack, S0, and we try to perform two pop operations. তেতিয়া কি হ'ব? तब क्या होगा? Underflow. अंडरफ्लो Stack होगा. तो underflow. क्योंकि एक बार आपने जब पॉप किया तो वो जीरो क्या हो गया? बाहर आ गए. हमने पॉप कर लिया. अब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट? अब कोई भी एलिमेंट नहीं है और फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं उसको पॉप करने की, एलिमेंट ही नहीं है, तो ये होता है स्टैक अंडरफ्लो. और ये जो स्टैक अंडरफ्लो इज अगेन एन एक्सेप्शन. एक एक्सेप्शन है ये. वो किस में फॉलो करता है? आपका सॉफ्टवेयर. ठीक है, समझ में आ गया सबको? इसी तरह का Yes, sir. हाँ, वेरी गुड. तो इस तरह का और 2-3 एग्जांपल आप लोग कोशिश करोगे, फाइंड, यू विल फाइंड इट आउट एंड यू विल लेट मी नो in the next class. But the questions particularly I have given you today, you should answer them right after you will get this recorded lecture. Okay, have it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. Yes, sir. okay, thank you. So with this I'm not moving ahead, I'm stopping right here.